भाई लोग। Okay, so great evening once again, and welcome you all in third episode of second season in the Aakash Bhabad Success Show. So basically, we will start with the cause. क्यों ये शो स्टार्ट हुआ, क्यों इसके पीछे का क्या रीजन है, वो आप लोगों से शेयर करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हर बार मैं शेयर करता हूँ कि हमने फर्स्ट सीजन जो लॉकडाउन में शुरुआत किया था, तब लॉकडाउन में बहुत परिस्थिति ऐसी थी कि बहुत सारे लोग निराश थे, डिमोटिवेटेड थे। वो लोग मन में ही हार चुके थे कि कैसे हम आगे बढ़े, क्या होगा आगे, पैंडेमिक में हम कैसे गुजरेंगे, अपना बिजनेस कैसे जाएगा, अपना लाइफ में क्या होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में थे और उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको कुछ सिखाने के लिए, उनको कुछ बताने के लिए ये शो की शुरुआत हुई थी, जहाँ पे हम अलग अलग सक्सेसफुल पर्सन्स को इनवाइट करते थे डिफरेंट इंडस्ट्री से। उनको पूछते थे कि आपके सक्सेस का राज क्या है, आप क्या ऐसे वैल्यूज, क्या प्रिंसिपल्स यूज करते हैं अपने लाइफ में जिससे आप सक्सेसफुल होते हैं, चाहे कंडीशंस कौन सी भी हो। तो ऐसे ही ये कारवा आगे बढ़ता रहा, 10-15 सेशंस उसके हुए। उसके बाद फिर एक नए सीजन के साथ हम लौटे हैं। इस बार जैसे सीजन की शुरुआत हुई, काफी सारे एजुकेटर्स से हमने सीखा कि वो अपने लाइफ में कैसे सक्सेसफुल हुए। उन्होंने भले ही लॉकडाउन हो या कुछ भी, कोई भी कठिन परिस्थिति हो, कैसे उन्होंने अपने लाइफ में बाउंस बैक किया, अपने बिजनेस में बाउंस बैक किया, अपने करियर में बाउंस बैक किया। और वही चीजें हम उनसे सीखते हैं, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। और कोशिश यही है, इस शो के पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इन सक्सेसफुल पर्सन से वो कुछ ना कुछ सीखे, अपने लाइफ में वो इम्प्लीमेंट करे और अपने लाइफ में, करियर में, बिजनेस में आगे बढ़े। और आज ऐसे ही हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़े हैं। तो आज 3 गेस्ट थे। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा डॉक्टर सोनिया अस्तानी मैम। शी इज AIEF ग्लोबल एम्बेसडर, पॉश कंसल्टेंट एंड एजुकेटर। दूसरे अपने ऑनरेबल गेस्ट है रेखा राज मैम। शी इज एजुकेटर एंड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ABCD भाबड़ इंटरनेशनल पब्लिकेशन एंड शी इज फ्रॉम जयपुर। और दोनों भी पर्सनैलिटीज है जो काफ़ी एक्सपीरियंस है उनका एजुकेशन में, और ऐसे ही सक्सेसफुल और एजुकेटर्स से हम आज कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। सो डॉक्टर सोनिया मैम एंड रेखा मैम, आप दोनों का भी स्वागत है द आकाश भाबड़ सक्सेस शो सीजन 2 और 3rd एपिसोड में। वेलकम ABCD इंटरनेशनल। Thank you, sir. Thank you for a warm introduction and welcome. थैंक यू मैम। तो इसी सवाल के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले तो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी हमें यहाँ पे लाइव सुन रहा है और जो भी अपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे जब भी लोग देखेंगे, तो वो जो पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, वो जो अपने व्यूवर्स रहेंगे, वो आपके बारे में ऑफकोर्स जानना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहला ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने आपके जो एजुकेशन में इतने साल आपने मेहनत किया है, कितना कंट्रीब्यूट किया है, तो ये फील्ड का आपका शुरुआत कैसे हुआ? क्या इसके पीछे कोई रीजन था या आपका कुछ खुद का पैशन था? Okay. वेल, मेरा एजुकेशन सेक्टर में एक्सपीरियंस जो है लास्ट 14 इयर्स का है और मैं गुजरात को बिलोंग करती हूँ। एंड जहां तक मेरा सवाल था कि उस समय मेरे लिए एक नीड था जॉब करना। इट वाज लाइक द डिमांड व्हाट माय फैमिली वांटेड, फाइनेंशियल, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड वर्क एंड आई स्टार्टेड टीचिंग इन अ स्कूल। फ्रॉम देयर, वहां से मुझे, क्योंकि मेरा स्पोकन इंग्लिश अच्छा था, मेरा कमांड ऑफ लैंग्वेज अच्छा था, तो मुझे जॉब जल्दी मिल गया। फिर उसको मैंने धीरे धीरे एनहांस किया और मैंने 11 साल दिए, लेकिन स्कूल में मैंने जॉब 3 साल से ज्यादा नहीं किया। उसके बाद मेरे अपने कोचिंग क्लासेस थे और 11 साल मैंने टीचिंग को देकर, उसके बाद अभी लास्ट 3 ईयर से मैं करियर काउंसलिंग में टोटल फोकस करती हूँ। मैंने अपना फील्ड चेंज किया क्योंकि जो मेरे ही अपने स्टूडेंट्स थे, कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। उन्होंने मुझे ये रियलाइज करवाया कि शायद काउंसलिंग वाज अ बेटर फील्ड फॉर मी।
a field which I should really belong to, because when जब वो लोग मेरे पास आते थे अपने डाउट्स लेकर, अपने करियर से फाइट करते हुए, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, तो हम लोग बैठ के साथ में उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढते थे, उनके लिए स्ट्रीम सिलेक्शन करते थे, सब्जेक्ट चॉइसेस, कॉम्बिनेशंस देखते थे, और सबकॉन्शियसली वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे पता भी नहीं पड़ा कब मेरा जो है वो इंटरेस्ट चेंज होता गया टीचिंग से काउंसलिंग की तरफ। और फिर मुझे करियर गाइडेंस के हिसाब से एक सर्टिफिकेशन कोर्स का पता पड़ा, फिर मैंने वो अपना सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया। मेरा सर्टिफिकेशन यूनिवर्सिटी से और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। उसके अलावा फिर मैंने पोस्ट प्रैक्टिशनर का भी कोर्स किया हुआ है, एंड आई एम ऑल्सो ग्लोबल एम्बेसडर फॉर ऑल इंडिया एजुकेशन फोरम. Well, it is a forum for all the educators, and it's a beautiful platform, I should say, which has really inspired us and really boosted us to be where we are today. तो हम लोगों का एक अपना ही स्ट्रगल रहा है। तो यस, मैंने जॉब से चालू किया था, लेकिन आज 14 साल के बाद मैं एक एस्टैब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड। वाह, सुपर सुपर, थैंक यू मैम। तो जैसा आपका जर्नी है, आपको बेस्ट विशेष फ्रॉम एबीसी इंटरनेशनल। ये रेखा मैम, आपको सेम सवाल हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में हमारे व्यूअर्स जानेंगे, उनको आपके बारे में पता चलेगा, आपके काम के बारे में पता चलेगा। प्लीज इंट्रोड्यूस मैम। गुड इवनिंग पहले तो सभी को। सर, इफ आई टॉक अबाउट मेरा करियर, तो बहुत छोटे से एज में हमने अपना करियर स्टार्ट किया था, 1998। मिडिल क्लास फैमिली को जब आप बिलोंग करते हैं तो आपके फैमिली के रिक्वायरमेंट्स कभी कभी आपको वर्किंग के लिए फोर्स करते हैं। तो सेम हैपेंड विद मी आल्सो। आफ्टर 12th आई हैड टू, बिकॉज वी वर 5 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर आई हैड। तो बस वहां से शुरुआत हुई कि कुछ करना है अपने लिए भी, फैमिली को भी थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए था उस समय पे, फॉर फैमिली सपोर्ट एंड फॉर माय सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिकॉज बहुत शाय स्टूडेंट थी मैं अपने टाइम पे। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई स्टार्टेड, ओके फाइन, कुछ तो करना है ताकि बोलना तो सीखूं कम से कम। हिंदी आती थी, इंग्लिश कुछ भी नहीं आती थी, नॉट इवन अ सिंगल सेंटेंस। टिल 12th आई कुड अटर, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जब मैंने फर्स्ट अपना जॉब को सर्च करना शुरू किया, तो 5 से 7 स्कूल्स में मैंने खुद ने इंटरव्यू दिया, जहाँ पे मेरा रिजेक्शन इसी वजह से हुआ क्योंकि मैं हिंदी में ही बात कर रही थी। आई कुड नॉट स्पीक, मुझे आ ही नहीं रहा था। अल्टीमेटली एक स्कूल में 700 रुपीज से हमने स्टार्ट किया जॉब। वहां पे हमें प्रिंसिपल जो हमारी थी, उन्होंने हमें मोटिवेट किया, सुनीता गुप्ता, आई स्टिल रिमेम्बर। एस वाले लोगों से मेरा बहुत सारा कनेक्शन है, सो ऑलवेज दिस एस पीपल आर क्लोज टू माई हार्ट। सो दैट प्रिंसिपल मैडम, मैंने कहा मैम मैं काम तो कर लूंगी, मैं क्रिएटिव हूँ, सब कुछ कर लूंगी थोड़ा बहुत, बट मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता। तो शी टोल्ड मी कि अगर ये बट बोल पा रहे हो ना, देन यू कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश, एक सेंटेंस भी बोलना सीख जाओगे। वहां से शुरुआत करी। उस स्कूल में उस समय 6 स्टूडेंट्स हुआ करते थे, प्री प्राइमरी स्कूल था। करियर की शुरुआत वहां से हुई। स्लोली एंड ग्रेजुअली अपना प्रोफेशन भी कैरी आउट किया। 5 years आई वर्क विद द सेम प्रिंसिपल। उनके साथ में रह के उन्हें भी मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, हम दोनों ने एक दूसरे को इंग्लिश बोलना सिखाया। देन लेटर ऑन अपग्रेडिंग माई सेल्फ, स्कूल चेंजेस किए, जैसा सोनिया मैम ने बोला कि आई केप्ट ऑन चेंजिंग स्कूल्स, बट आई एम नॉट अ पर्सन हु बिलीव्स इन चेंजिंग। वो स्कूल चेंज, बिकॉज आई एम वेरी इमोशनली अटैच्ड टू जो भी होता है ना, आई गेट सो मच अटैच्ड टू पीपल की नहीं यार, I take it as a family. So that was a family first, family after my parents who always motivated me. Started learning. After that, I joined one more school. Then I gave, after my marriage, 8 years to one particular institute where even there I was motivated by my principal. So these are the people who always kept motivating, always kept guiding. Now I'm a PGT English training students. I am into administration work. I am into activity in charge who's taking care of all the activities conducted in the school. And yes, of course, children are very much scared of me too, because I'm very strict, a disciplined person. And as Sonia ma'am said, even I am a kind of person who keeps on looking for change, not for school, but yes, for career. So from teaching to creativity, from creativity to counseling, I had also done a certified course in counseling. So hopefully soon to be a counselor. Let's see, kab tak.
awesome, awesome. Thank you मैम. स्ट्रिक है, आप जैसे हम आपको जानते हैं काफी दिनों से, स्ट्रिक तो है पर काफी सपोर्टिव भी है, और ऑफ कोर्स आपका स्ट्रिकनेस वो किसी को महसूस नहीं होता है, पर ऑफ कोर्स आपका जो जर्नी रहा है काफी अच्छा है. तो थैंक यू मैम फॉर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ. तो एक और गेस्ट को हम इंट्रोड्यूस करते हैं. I would like to add one more thing on Rekha ma'am's achievement, that she has just given in her personal interview in All India radio station as well. Ma'am, you should edit. I have heard your success story there only. You forget to mention this, but I remember. Yes. So I would like to add this. Thank you, Preeti ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. A pleasure. Yes. Okay, thank you, ma'am. So let's introduce our another guest. She is Professor Rachna Chakravarti, ma'am. She's from Mumbai and काफी एक्टिव रहते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे रेगुलरली. वो सेशंस वगैरह उनके इंटरनेशनल लेवल पे चलते रहते हैं, और वेरी सपोर्टिव पर्सन, एजुकेटर है. और जैसे हम सो शी इज ऑल्सो HR हेड ऑफ ABCD इंटरनेशनल और पब्लिकेशन. सो मैं तो ज़्यादा उनके बारे में बोल नहीं पाऊँगा. अगर वो खुद इंट्रोड्यूस करेंगे तो ऑफ कोर्स हम उनके बारे में और ज़्यादा जान पाएंगे. तो आई रिक्वेस्ट मैम, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट. Thank you so much, Aakash sir, and good evening to all the other eminent dignitaries also present here. I'm very sorry because I joined late. Again, glitches, network glitches. I was just trying, and then again my computer got shut off. So again, I had to reload it. So that is why no, we have network for our benefits, but network again makes us into a big question mark. So thank you, Aakash ji, for giving me the chance. And thank you, Dr. Sonia and Rekha ma'am. I just now heard Rekha ma'am. Sonia ma'am, I just missed your part because of this network glitch coming and going. But obviously I'll be there in the session. So we'll get to know each other more and more. So it's really nice and so humble of Aakash ji to allow me to speak about myself. So the first thing which is very important right now is self-love. So Aakash ji is giving that impact in the success story all over again. So we need to have that self-love. So probably we just forgot speaking about ourselves in this runway of the journey. So talking about me, which I even tell my students, I really feel good talking about me. And Aakash ji, I don't know how you'll take it, but I'm really now going to tell a little bit about me and the kind of work which I'm doing. Of course, 26 years of long journey with my students, and always it has been a target for me to work as a catalyst in transforming the students' life. And after that, of course, students till date, I'm with students, for the students, by the students, of the students. So everyone knows me as RC ma'am, Rachna Chakravarti, Mumbai in the suburbs, as well as even in the harbor lines, anywhere my notes have been circulated. So it gives me really pleasure when I get to know that students, we need to interact with the students. Teaching is okay. They have a lot of books nowadays, e-books and all, but a teacher's part is a mentor's part. If a teacher can become a role model in the life of a student, then the teacher has achieved everything. So being a catalyst in transforming the student's life, I am also a writer, sharing my experiences with my students through this past 26 years, an educational counselor, motivational speaker, of course, a social activist for the last 4 to 5 years in active motion also. I visit a lot of people, and we do our smile missions. We have started with the smile missions. People, I had seen throughout my life that people are always donating money, food, clothes, everything to the poor people, to the people who are little, economically not sound. But I feel what they need more is your time. If you can spend some time with these people, their
stress mental level which they are going in, that depression, that goes away. So I have done that for the past practically I have been going visiting these people, especially the farmers in the villages. And I have also told Aakash I'll be visiting some with him also, so that we can have these sessions with them, coming out, talking with them. They feel so good. Their positivity increases, that somebody has come all the way just to talk to them. They feel that they have been rejected, and they feel that nobody cares about them. As a result, the depression comes. They know to work. We don't have to support them. They are all empowered. We just need to give our time. So if we can do that, and I have been working actively with my team members. We have all the mothers, especially some homemakers. Of course, educators are also there, and most of them are homemakers. I try to involve them, because after their, the life is in a homemaking, they have forgotten who they are. So I want them to understand exactly who they are. So I'm working in that also. Yeah. And of course, I am right now working with the Maharashtra State Board, the Deputy Chief Moderator for English Department, and writing several books for the Maharashtra State Board also. And we have a big team, of course. And recently we had to go to Pune also for the course books, which we are taking out for the NEP, new NEP. So working with them as well as with my students, the examination marks, and deciding for them the state board level, and taking the students to that level. English is a language which, whether we like it or not, we need to learn that language, because we need to spread out far and wide. If we are just in our own area, then we will not be able to share our knowledge. So if we meet people from different level, of course we can share. So for that we need English, but English should be in such, I believe, the language should be in such a way that students accept it. Students should not think that why are we learning this language? So I try to make this language more appropriate and more reachable out, whether it's to the students or to the counselors or in any other work areas. I just communicate with them and tell them that language is not a factor. Communication is a factor. Of course, we need to communicate. Suppose I'm communicating with somebody in Greece, there should be a common medium of language. And maybe that person is very good for me. So as a result, I need to really communicate with that person. So what do I need? I need, of course, the language. So we need to find out that the common language of everyone. The common language will only bring us together. So if we can have a common language together, then there is no problem. Yeah. So actually, we actually need to be the hero of our students. So if the students think that they have gained something from me today, then my work is done totally. And I believe that nothing can be more important than doing what your students want you to do. Yeah. Still now, even now at present days, when I'm working with my students in my class lectures, we have students who are very, very mischievous. But to get connected with them, we need not start with big strict face. Your one word or your entry into the class should make all the students keep quiet. So you need not shout and tell them, because that really disturbs them. The generation of students have changed. When we were students at that time, it was totally different. But now the students want that communication with the teachers, and then they can understand that what really the teachers want. So I don't have to say anything to my students. Now I'm really teaching boys. Last year I was with the girls. So teaching boys at this age, the teenage period, it's really difficult. It's really a challenge. You need to become their friends, but not that friend as a teacher. So you need to keep that gap, that level. You need to understand that, yes, you are a teacher, but of course a friend also. You need not become totally friend with a student.
then the student will never listen to you. Our intention is to make a friendly atmosphere and not building friendship. So atmosphere should be friendly, Yes, exactly. wherein the child talks. So I have been doing that, making out my own rules. But of course, the authorities in the school, they want quick results. So there is a big challenge. The principal and they say that, Rachna ma'am, why it's getting delayed? I want this boys to be out of my school. I said, ma'am, give me just little time. You just see how these boys bring up the name and fame of the school. These are the boys who will really bring up the name of our school. So with that intention, I've started with my career 26 years back when I was a learner at that time. My MA level studies was going on, but I became a teacher because I loved the teaching profession very much. So till date, I'm a teacher, not only teaching students, but even educating the women, the children, outside, inside. So being an educator is my goal and motto of life. So thank you. I think I've taken a lot of your time, Thank you. Aakash ji. No, मैम, इट्स एग्जैक्टली एब्सोल्युटली फाइन. तो आपके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला. आपका इंटेंशन क्या है उसके पीछे, आप जो टीचिंग करते हैं, जो आपको वैल्यू देते हैं. ऑफकोर्स हम सबके पास कुछ ना कुछ गोल होना चाहिए. हम कोई भी चीज करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. तो अगर हम ऐसा इंटेंशनली कुछ काम कर दे तो बेटर रिजल्ट भी आते हैं. और जैसे आप कुछ काम करते हैं, ऑफकोर्स मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, तो मैं वो भी देखता हूँ. जैसे आपने वो हैप्पी मूवमेंट का, जो स्माइल मूवमेंट का काम किया है, तो ऑफकोर्स आज के ज़माने में लोग हंसना भूल गए हैं. और ये अपना भी कोशिश होना चाहिए, हर एक का कोशिश होना चाहिए कि कुछ ना कुछ लोगों को हंसाओ. मैंने मेरे किताब में लिखा था कि हर रोज किसी न किसी को हंसाना है, तो एक आदत बनाना है. तो भले ही कोई मिले ना मिले, अनजान आदमी, हम बस में भी ट्रैवल करते तो किसी को भी स्माइल देंगे तो वो मारेगा नहीं, पहले स्माइल ही देगा. हम बार बार देंगे तो कुछ हो सकता है, पर पहले तो एक बार तो कम से कम स्माइल दे सकते हैं. तो अपना एक टारगेट कंप्लीट होना, और अपने को भी अच्छा लगता है. तो आई होप ऐसा कुछ हम करेंगे तो ऑफकोर्स लोगों को खुशी दे सकते हैं, और अलग अलग अपने एक्टिविटीज से हम वो कोशिश करेंगे ही. तो लेट्स आगे बढ़ते हैं. तो हम सर आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज रचना मैम के लिए बोलना चाहूंगी. मैम जो अपने बारे में बताना भूल गए, she is a very good orator, a very good moderator. I have seen her on many platforms. She brings the sessions to life with her voice. यस, एग्जैक्टली. ये भी मैं भूल गया था. तो काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पे हम रचना मैम को देखते हैं, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. एबीसीडी के लिए भी ऑफकोर्स उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे सपोर्ट करते हैं. और ऑफकोर्स इन फ्यूचर भी हम देखेंगे 6 तारीख को लाइव. सो वंस अगेन थैंक यू ऑल गेस्ट फॉर योर इंट्रोडक्शन. आगे बढ़ते हैं. हम अपने पार्टिसिपेंट्स को कुछ देना चाहते हैं, तो सीधे हम उस सवाल पे आते हैं कि क्या आपको ऐसा क्या लगता है आपके करियर को, आपकी लाइफ जर्नी को देख के, कि क्या ऐसे सक्सेस के प्रिंसिपल से या क्या ऐसी हैबिट्स से, रैंडमली आप कुछ भी बता सकते हैं हैबिट्स, क्वालिटीज के ऊपर, तो क्या ऐसी चीज होनी चाहिए, 2 चीजें हर एक को बताना है कि 2 चीजें जो अपने लाइफ में हो तो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं. अगर आपका इंटेंशन सही है, अगर आपके अंदर है कि हम मुझे सक्सेसफुल बनना है, तो कौन से ऐसी 2 चीजें हैं जो अपने लाइफ होनी चाहिए. और हम 2 चीजें सभी गेस्ट से सुनेंगे. ओके. तो हाँ, जब मैं अपनी जर्नी देखती हूँ तो मैं ये महसूस करती हूँ, I feel that what is more important for us is that we should be a learner always, and you should be a positive person. Whenever you are doing anything with a positive mind and you are ready to learn, accept learning, you will always have success. Maybe it will take time, but it will surely come to you. You know, so that is one thing that I've really taken from my journey. And second is, when you are able to make a balance between your personal and your professional life, जब एक की वजह से दूसरी जॉब नहीं होती है, तो वो आपके सक्सेस का सबसे बड़ा की फैक्टर रहता है. Because at that time, whenever you also have a lot of work, the family supports you, and when there is family when needs you, you leave all the work and you come to the family.
So when this balance is there, no, I think we can never see failure in this. This is one of the biggest thing that anybody has to understand. नॉर्मली लोगों का होता क्या है, वो किसी एक ही दिशा में काम करते जाते हैं. दे वर्क ओनली टुवर्ड्स वन. इफ दे आर अ होम मेकर, दे ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन इट. वो बाकी सारी चीजें भूल चुके होते हैं. एज मैम सेड, यू नो, द मेनी फीमेल्स whom she wakes up to self explore themselves, you know, they have an identity of their own. Yes, we need to identify what we are. We should know our own self first. But at the same time, we also need to understand that if I am given permission to work, if I am a free bird, if I am an entrepreneur, I can do work outside, then equal balance should be taken at the house also. I need to give equal attention to it. So when I make a balance between the two, I think that is the main key to my success. Yes, that is one thing. And learning and growing with it. Looking into the positive side, as many people say कि पैंडेमिक जो था वो बहुत नेगेटिविटी लेकर आया, पैंडेमिक ने ये कर दिया, पैंडेमिक ने ऐसा कर दिया, बिजनेसेस क्लोज कर दिए. लेकिन कहीं ना कहीं मैं I thank pandemic. Yes, even I didn't get monetary benefit out of 1.5 years, but yes, I got the benefit of creating a new family, you know, through these virtual platforms. I think which was not possible for me to come and know so many educators around India if this pandemic was not there. Because till then we were all in our shells. Nobody wanted to try to work online, work from home. These concepts were far behind for us. But because of pandemic, we all came into all this. We all started working together, collaborating, enriching each other's knowledge, sharing knowledge with each other. And I think that has been a bigger earning for us than seeing the monetary benefits out of it. So this is what I wanted to say. Yes, exactly. Yes, thank you, ma'am. Yes, Rekha ma'am. Sonia ma'am, very well said. This pandemic, if we talk about, it has actually took us to a new height where we can create and actually find out our true selves. Same happened with me also. Like when we are doing things, we were not even aware that the world is so big. Although people are making complaints, they are cribbing, I would say. We did not get this, we were at loss, we were all alone, we were isolated, we came to know the true faces of people. People are with these points. But yes, of course, we came to know the world which is actually beyond our reach, but we can take it into our hands if we really wish to. So we have to, if we talk about our two things, if we talk about how we can actually grow as a person. So meeting people, accepting their viewpoint with our smartness is the first thing a person needs. Second is of course, your intelligence, how you're using it and how you're managing your time. You can be into so many things, whatever you want, but you have to manage it so well that you are not disturbing your peace of mind. That is the most important thing which is required when we are working anywhere, X, Y, Z, professionally or in person. We are working for ourselves even. We need to tell ourselves each day. Affirmations play a major role. So we need positivity, as you already said. And these affirmations, I feel, if we are positive, if we are actually asking ourselves, I can do it, so it will definitely show you a way that yes, you can do it. So these two things, what I feel is things Please unmute, which will really take you to heights, that is meeting with people. As and when you grow up, as and when your circle will be enlarged, you'll be automatically getting benefits as a person also, as a social person also, as a group also, as an individual also. So I think these are the most important thing which I got. And yes, I am into a profession which is giving me many. Yes. And yes, Aakash sir, you are one of the asset out of them. Thank you so much. Thank you, ma'am. Yes, acceptance is very important. अगर हम accept कर लेते हैं
तो ऑफ कोर्स मिरेकल चेंजेस हो सकते हैं, ये मेरे स्पिरिचुअल मेंटर से मैंने सीखा था और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो आज हमारे पार्टिसिपेंट्स व्यूवर्स को भी ये बताना चाहूंगा कि जो मैम ने कुछ चीजें बताई है, सोनिया मैम ने भी और रेखा मैम ने भी, तो एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले एक्सेप्ट कर लो परिस्थिति को, फिर आप सोच पाएंगे कि आगे क्या करना है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी चीज को, किसी परिस्थिति को, किसी व्यक्ति को, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। यस, तो लेट्स आगे बढ़ते हैं। रचना मैम प्लीज आप ऐसे कोई 2 चीजें बताइए जो किसी भी सक्सेसफुल इंसान में होनी चाहिए, या आपको लगता है कि आपके लिए वो काफी इम्पोर्टेंट थी। Yeah, thank you so much, Akash ji, for that wonderful question. And Sonia ji and Rekha ji, आप दोनों ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया what is very important to be a successful person. I just want to affirm on that point that yes, success is really subjective. Everyone has their different parameters of success. So according to that, we need to just idealize what your focus is on. So I feel that when a successful person is, when you want to become really successful in your life, you just need to have your focus, your clear plan, and put that goals into that. So a plan should be there. You just cannot jump into anything. Today you plan that you'll open up a school. So without a plan, you just want to open it up. So that will not give you success. You need to really work the market area. What is the requirement? Because there are many schools and many institutions who are training the children. So you need to have a proper plan. And what is your goal in that plan? So that is the first important thing, having an accurate plan for it. And secondly, which I feel is that positive attitude. So, we need to have our positive attitude, and you need to affirm yourself, I will do it, and I will achieve it. You cannot leave the threads loose at one point and go away. नहीं, अब मुझसे नहीं हो रहा है, अब मैं छोड़ रहा हूँ, बस बहुत हो गया, मैंने बहुत देख लिया. No, there might be a lot of ups and downs, but we cannot give up, because first you had a plan, then you went into it. Now there can be ups and downs. There can be a lot of, target points where you are under the situation where you want to give up. But if you give up at that point, that is your loss. Because you had planned it and then you came. So you need to have that positive attitude and always put that affirmation in you. I will do it. So I will attain that success. So the best teacher award, I will get it. So I always, I just want to share that I always want to say to myself, I should get the best teachers award one day. And I don't deny with that. I agree to that yes, I will get it one day. Surely somebody will really see, and my name will be proposed for the best teacher award. So I never give up the hope. It's okay when my bank balance is less. I don't work for bank balances. I just work for getting that, that twinkle in the eyes of the children. When the children sees me enter the class, and when I see them smile with happiness that yes, in this lecture we can say everything and clear up all our doubts, then that's my achievement. So you need to work with a positive attitude. We will always face, koi bhi workplace pe aap jayenge, Aakash ji, you will face this negative attitude. So whenever I conduct my workshops also in the offices and all, so there I just tell them that you might have negative people around you, but that should not affect you. Nahi mera resignation. I have seen a lot of people in the offices, they carry in their bag the resignation letter and they move around. कि अगर किसी ने थोड़ा सा भी उनके रिस्पेक्ट को हर्ट किया या कहीं पर भी वो डाउन फील कर रहे हैं, तो रेजिग्नेशन, घर पे बैठ जाएंगे, काम नहीं करेंगे, पूरे दिन बैठे रहेंगे, लेकिन they will not take a little bit of negative thing. Rather, I feel you should come out and prove to that person that you are not that. You are not that kind of a person. With your work should say everything. I don't believe that all the time, you have to show it off.
You have to show it in that institute what you can do, so that all the people will start thinking कि उन्होंने क्या गलती की आपको छोड़ के. So you need to make them realize. Yes, Your exactly. positive attitude will make them realize that. And I have seen that coming to me also, that people call me back that, ma'am, can you just come for a lecture, one lecture? So I said, now I'm really very busy. So those institutes which I've left, I really don't want to go back. But my students, if they call me, I surely do turn back. So we need to have a positive attitude. You can choose the positive side of the things no matter what circumstance. It can affect the aspect of your life, Yes. and it will help you to tackle the difficult circumstances which you will come. हर एक लेवल में आपके पास बहुत सारे टारगेट लेवल्स आते हैं, तो अगर आप उसको एक एक करके ओवरकम कर सकते हो, and you can do that, let me tell you, don't get me wrong, you will be able to overcome that if you have a positive attitude, if you have a smile in your face, if you just don't crib, don't make that, in your face come out. You are more better equipped to deal with this stress and make it in a healthier way. So basically, it is very good to be with such persons when you are having that positive impact in your life. So these are the two things, Aakash ji, which I want to share. Yes, yes. Thank you. Thank you. Rachna ma'am, exactly, for ma'am. this Clear focus statement, as is you very said, important. when people criticize, people criticize, I just actually came up a few days ahead. There was a statement, means it came out of my heart only. Even we should respect those who criticize. Fine, because in our absence, they are missing us. So that is why they are criticizing. At least they are giving value to us. So we There's a scope of new learning, ma'am. There's a scope of new learning for us. Correct. Maybe that is what I'm saying. There's something good in that. Yeah, that is why. And I would like to say one thing, ma'am. Success is like a sapling for us, We need to have patience to see it grow like a plant, then a tree, and give us fruits and flowers. It does not come out in a jiffy. So it's a sapling. It needs nurture. It needs care. It needs time. It needs everything. It's like bringing up a baby. So we need to have that patience in us. That is more important. And when you look at it positively, that aura which you have will surely give you a result. Maybe a little late, but it will give you results. I tag my journey as from ma'am to mom. There are many students who invite me for their marriages. उनमें से कईयों के बच्चे हुए हैं. They even call me, ma'am, इसका नाम क्या रखना है? Happy Mother's Day, ma'am. So that journey from a ma'am to mom is real learning for me than the monetary benefit that I've got in last 14 years. That is the biggest asset, ma'am, when we get when our children call us ma. Clear, even I have been 80% of the students, they are calling me ma. So it is an asset, means when they listen to you, what you say as a guide, as a true inspirer. So that gives us inspiration. That is the biggest thing. And that is what we are working for, that twinkle in the eyes of the children. So that is very, very important. And that is what success also means, that we need to be a learner throughout our life. As Swami Vivekananda said, that our learning process does not stop. Even if we are so much educated, we are just a small grain of sand in the vast ocean. So the ocean is there, your learning is still going on. Every year we get new students and I learn from them. Of course, they are learning from me, what they are learning, but I learn from them. I grow up with them. Yes, exactly. And we are also learning from you all. तो जैसे हम आज सीखे हैं कि पॉजिटिविटी हमारे अंदर होना चाहिए. ऑफ कोर्स पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम आगे बढ़ेंगे, क्लियर फोकस होगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं. ऑफ कोर्स एक्सेप्टेंस, अगर हम एक्सेप्ट करते हैं परिस्थिति को, व्यक्ति को, तो हम आगे अच्छे से सोच सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं. तो यही कुछ पॉइंट्स थे, हम ये लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे. जितने भी व्यूवर्स बाद में देखेंगे तो ऑफ कोर्स आप लोगों को सिर्फ ये सुनना नहीं है, सुनने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, पर अगर यही अच्छी बातें हम अपने जीवन में उतारेंगे तो ऑफ कोर्स हम भी सक्सेसफुल बन सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं. जिस भी लेवल पे है हम अपना लेवल और आगे बढ़ सकते हैं. तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं एक लास्ट क्वेश्चन के साथ.
सभी को एक लास्ट क्वेश्चन हम पूछेंगे और उनसे और कुछ ज्यादा चीजें हम सीखेंगे, उनके लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करेंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसी आपकी जर्नी रही है, क्या वो एक एग्जांपल आप शेयर कीजिए जिससे आपको लगा कि हाँ, मेरा ये जो करियर मैंने जो चूज किया था, ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि ये एग्जांपल से या ये इंसिडेंट से मुझे ऐसा खुद को आपको ऐसा लगा हो कि हाँ, ये मतलब ये करियर मेरे लिए सक्सेसफुल रहा या मैं सक्सेसफुल हूँ। तो ऐसा कौन से इंसिडेंट है, भले आप पर्सनल लाइफ का एग्जांपल भी शेयर कर सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ का भी शेयर कर सकते हैं, पर वो इंसिडेंट जो जिससे आपको लगा कि हाँ, या तो अपन जैसे बोलते हैं ना कि वाव मूवमेंट, तो आपके कौन सा वो एग्जांपल है जिसमें आपको लगता है कि वाव मूवमेंट है और वो आप शेयर कर सकते हैं। एक्चुअली सर, जब मैं इस प्रोफेशन में आई थी एज एन एजुकेटर, व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी इनटू द एजुकेशन सेक्टर, इट वाज एक्चुअली जस्ट टू सपोर्ट माय फैमिली, because I was very good with my language, my communication skills, and that's how I had got my job, because I did not have a B.Ed. And I started enjoying teaching actually to students. I started building a rapport with them. But yes, it really felt good when my children, my students used to come out with good success. And they used to come and share that success with me. It used to make me feel as if I have succeeded in something very big. And I used to narrate it as if, that was my success. The crown was on my head. And this really inspired me to go into depth of it. And slowly it has become a 14 years journey. And now also I'm trying to look into it that I can touch as many students as possible in order to help them to create an awareness, to take the right subjects, right stream selection, make a career in the field that they are interested in, and that is their. And I think the day I find those things in the children and their parents, that they're giving children the freedom of choosing their stream, choosing their subject, a profession that they love to do, a passion for it. I think that will be the day when I'll really feel, yes, I've succeeded in the field I'm working today. awesome. Thank you मैम फॉर शेयरिंग। तो ये सवाल पूछने के पीछे एक रीजन भी था, जैसे हम बोलते हैं कि ऐसी कुछ चीज है, देखिए हम सबको तो सीखने को तो मिल रहा है, तो पर हम जो गेस्ट है, जब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो आपके अंदर जो एक आप फिर से याद कर पाएंगे वो इंसिडेंट्स को जो आपने कंट्रीब्यूट किया है। कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो आपको वापस से आप रियलाइज करते हैं, उसको फील कर पाते हैं, तो एक अलग खुशी आती है, एक और मोटिवेशन आता है कि हाँ, मैं और इससे ज्यादा और कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ऑफ कोर्स ये आप लोगों के लिए तो ऑफ कोर्स वो बहुत बढ़िया चीज है या बढ़िया मोमेंट है, पर हम लोगों को भी उसमें से काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो थैंक यू मैम फॉर योर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन। आपने आपके बारे में जो बताया, आपकी जो आपसे हम काफी कुछ सीखे हैं, जैसे पॉजिटिविटी, लाइफ का प्रोफेशन बैलेंस, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सेम क्वेश्चन और अनदर गेस्ट के पास। तो यस रेखा मैम, आप अपने एग्जांपल्स को शेयर कर सकते हैं, आप अपने मोमेंट्स को शेयर कर सकते हैं। सर ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, वैसे मैं मेरे बच्चों के साथ भी शेयर करती हूँ ना। आई वुड लव टू शेयर विद यू पीपल ऑल्सो। एक्चुअली आई वाज अ क्लास टीचर ऑफ क्लास 8A, आई स्टिल रिमेम्बर। उन बच्चों को मैं 4th स्टैंडर्ड से पढ़ा रही थी। दे नो कि बर्थडे कब सेलिब्रेट होता है, 7th Feb रोज डे होता है, एंड वी हैड द असेंबली ऑन दैट पर्टिकुलर डे, बिकॉज इट विल टेक 5 minutes, you have to hear if you really wish to see the aha moment, so I'll be sharing. So we used to prepare the students, and being I said I actually blackmail the students emotionally also. So I told them like everybody in my class has to participate. So 3 students out of them, they didn't want to participate, and they said no, we will not. Stubborn होते हैं boys, as ma'am said. Boys को tackle करना it's very difficult. 3 बच्चे बड़े stubborn थे. I still remember the names, but I won't take the names. So I told them, नहीं बेटा, okay fine, you don't want to participate, but I need it as a birthday gift. So 2 out of them, they just agreed, but one child, he refused.
So it actually hurt my ego also कि यार इतने 18 years का career हो गया और ये बच्चा एक बच्चा मुझसे नहीं संभल रहा. Fine. Next day I had the assembly. Principal appreciated the assembly, but it was not wow assembly because I was not involved deeply into it because I became angry. I went to the classroom after the assembly. The students were waiting for me there with the cake and everything, with the gifts and all. We don't accept the gifts, but हाँ handmade लाते हैं तो card and notes and everything is acceptable. I went to the classroom. I was very much annoyed. I had tears in my eyes because I could not tackle that one child, and that day even he did not participate. Children actually bought the cake, homemade cake. One child has made. So they told me, ma'am, they decorated the classroom. I reached there, but I was so stubborn. I said, no, I don't want to. Ma'am, please. I was having tears. I don't know why I became so emotional that day. I had tears in my eyes that day. They were waiting for me to cut the cake because it was birthday or they wanted 4 years से हमारी same class teacher है. They used to put it in the drop box. We want the same class teacher. So they were very closely attached to me. बहुत affectionate बच्चे थे. लेके आए अपने हाथों से चॉकलेट बनी हुई थी बट हम हमारे गुस्से में कभी कभी इतना कर जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है. उन बच्चों ने कहा मैम देखो तो सही प्लीज ओपन इट. देखो हमने मतलब आप देखो बट आई वाज नहीं करना है. So said, ma'am, अगर आप नहीं काटोगे ना तो we'll throw this into dustbin. मैंने कहा do whatever you want and go to your library period. It was Thursday that day. And they were so annoyed और इतने friendly थे कि they took it out and threw it in the dustbin. पूरा cake dustbin में गया. After that, after some time, second, third period, I realized just for one child, I have hurt the feelings of entire class. I took the permission from my coordinator. I told, sir, I need to get a cake from the canteen and I'll cut with the students. Sixth period, I got the cake. We cut the cake, but I, out of that anger, announced it in the class that I am not going to share this piece of cake with this child who had actually disrespected the teacher. And that was the scene done. After 2-3 days, I didn't have my own personal phone. That time I had my husband's phone. So I was just, it came into my hand by chance. I had that life was also very severe. So suddenly it came into my hand and I just got to. Message was at 11:59:59. 6th of February, 11:59:59. It was written that child did not know how to write the spelling of wish. He wrote happy birthday. Instead of this, he said, wise you, ma'am. Instead of M-A-M, he just simply wrote M-double-A. M-double-A, it was mentioned over there. Wise you, a happy birthday, M-A-A. And that was missing. The last M was missing. This I came to know after 2 days. And he was the same child who had made all the preparations and who did not participate in the assembly that day. And later on, I came to know that he was taking me as his own mother because he was not that much attached to his parents. He was sent to the hostel. He was a hostler. In 8th standard, I came to know the reality that he was a person who was actually feeling dejected. When I came to know later on from the students and everybody, so the entire story came in front of me. And that incident turned me from a teacher into a mother. And after that, children, till date, they call me Ma instead of ma'am. That batch of 18 students still. So that was a wow moment and the child is still connected to me. On a single day, he has forgotten to wish me morning and whatever the happy days are there, every day I receive the message, but I have been transformed. So that was the incident, a wow moment I still remember and I'll forever remember. Awesome. Thank you ma'am for sharing with us. Thank you sir. Yes. तो ऐसी कुछ चीजें हैं हम इस शो के माध्यम से, पता नहीं आज मैंने आपको कोई प्रिपेयर क्वेश्चंस जैसा हम रेगुलरली जैसे क्वेश्चन पूछते वैसे पूछे नहीं, एक फ्लो के साथ हम चलते हैं. अभी जो भी अपना शो होता है
कभी भी ऐसा पहले से क्वेश्चन हम प्रिपेयर करके रखते हैं या ऐसे कोई किसी को बता के रखते हैं, ऐसा कभी होता नहीं। ऑन द वे जैसे हम फ्लो में जाते हैं वैसे चीजें सब होती है। और यही इस शो की खासियत है कि हम कैसे वो इमोशंस को देखिए, आपने जो एग्जांपल शेयर किए भले ही आपके लिए वो इतने एकदम हर्ट टचिंग है, पर जब आप वो बताते हैं तो एक अलग, सबको एक अलग ही एक फीलिंग आता है। आप बाकी जितने भी लोग आपको देखते हैं जब आपको सुनेंगे तो ऑफकोर्स वो भी इंस्पायर होंगे, वो भी कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू ऑल फॉर शेयरिंग वंडरफुल एग्जांपल। तो रचना मैम आप शेयर कीजिए उसके बाद। Yes, it was wonderful listening to Rekha ma'am. आपने बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल बोला। लेकिन as being an educator, I think I have several examples. मेरे पास तो इतने सारे wow moments हैं। I have, but one was to be shared, so I had to. So now I was thinking when you are talking, मैं कौन सा? We have to share only one. Yeah, so I was thinking कौन सा wow moment बोलूं, because my every day with the students are wow moments. Every single day I have something to be shared. I come home, I'm so happy when I'm with my students. The day I'm not in school, or the day I don't go and teach my students, I'm very sad. I want to be with them and I want to change them. So to take a wow moment, I'll just come in this recent educational year, because there are a lot of wow moments. आकाश जी बहुत सारे हैं, तो वो हम लोग बाद में बात करेंगे उसके बारे में, because it's really nice to share. We can learn from there each other. Especially I take up one wow moments and share in different sessions that how I have tried to transform and how it was successful. In the talks only we can change. हम बातें कर के भी किसी को change कर सकते हैं, और वो आपकी बातों में आग कभी आ गए उसको भी नहीं पता चला सामने वाले को। So ऐसा मेरे पास बहुत सारे wow moments हैं। लेकिन एक इसी साल का अभी just June month में I was given the class teachership of a boys class, 10th standard. So they are very, very, notorious student, and they were pushed into this class. They were supposed to go to be D, and then suddenly they got into C. So they were very upset, and they didn't want actually to be in that division. But then I saw that there were certain boys who have a team. उनके अलग से वो डॉन है, मतलब ग्रुप के पूरे इलाका के डॉन भी है वो लोग। तो ऐसे डॉन बच्चों को, एंड बेसिकली आई एम अ शॉर्ट हाइटेड टीचर, सो बीइंग अ शॉर्ट हाइटेड एंड बॉयज जो है मेरे से ट्रिपल हाइट में है, सो ऑफ कोर्स व्हेन दे स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी सर्कल, तो मैं दिखूंगी नहीं, ज्यादा मेरे स्टूडेंट्स ही दिखेंगे। So that is there, one more factor. So, but how you come out of it and how you make your students. So that was my wow moment, that these students, every teacher told me in the beginning, ma'am, you don't know, ये 7th standard से ये लोग सब rowdy बन गए, आप उनको handle नहीं कर पाएंगे, आप बोल दो आपको girls class देने के लिए, आपसे नहीं हो पाएगा मैम, discipline, they are indisciplined students, सब कुछ भी, yes, they were little bit, but as a this thing, I know that boys are little naughty than the girls. Girls can be trained more easily. Normally I always get girls class as a class teacher, so it's very good with me. I have a very good rapport with them. But this time when it was with boys, I had little this thing, that tug of war also in the beginning, but to impress them. So first thing which I did is that took out the dawn of the class. I understood by looking at that everyone listens to him. So I just went to him and emotionally, always the teachers, as Rekha ma'am said, हमारी वो आदत ही रहती है बच्चों को थोड़ा emotional touch दे सके, and that feeling. So I went and talked with that boy who is having a lot of connection with the other boys in the classroom. So talking with that boy, मैंने उनको सिर्फ इतना बोला कि I just want you to become the best boy of the class. All the teachers have told lot of good things about you and you are changing. And this was the change reflected in his eyes. His eyes twinkled. He knew he was bad. He smokes outside, 10th standard boy. I don't want to mention names. If my students are watching, they will know.
whom I'm talking about. But he is smoking outside. He's doing a lot of other things, XYZ. But in the classroom, when I told him in front of all the students that this child is really trying to change himself, and he was like, मतलब मैंने कब चेंज किया मेरे को, मतलब वैसा उसकी आदत थी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं ऐसा. तो मैंने आई जस्ट टोल्ड हिम, मैंने उसको सिर्फ बोला कि बेटा आई हैव हर्ड लॉट ऑफ गुड थिंग्स, बहुत सारे टीचर्स आपके बारे में बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि आप बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं. बस दैट वाज द चेंज इन दिस बॉय. वो तुरंत उस पहला दिन जब आया था उसके बटन एकदम खुले हुए थे, क्लास में बैठ गए ऐसे, मतलब हाँ बोलो मिस क्या है. But when I told him, beta, come here. So, and I just talked with him that you are changing and all the teachers like you, including me. How is this possible? You should put some of these qualities into your friends. So he was very happy to take the responsibility. Next lecture, when I entered the class, his buttons were closed till the neck. I didn't have to tell him. His buttons automatically got closed till the neck. This was in the month of June. I'm talking about a recent one. So the wow moment. So he became more disciplined, and his haircut, the next day he was coming like a punk in the class, you know, full hairstyle like this. I didn't even know what is this hairstyle called. But then I had to deal with them full. मुझे SSC तक लेके जाना है उनको, और रिजल्ट भी टारगेट है मेरा स्कूल के लिए. I have to get the best result. But ऐसे बच्चों को मोल्ड कैसे करना है? मुझे मेरे कलीग्स ने बोला, मिस रचना मिस आप उनको मारो, निकाल दो क्लास से, पेरेंट्स को बुला लो. आई सेड वेट, अभी मैं हूँ, मुझे करने दो बातें. तो देन दिस चाइल्ड हु वाज द रियल डॉन, आई टोल्ड हिम दैट फ्रॉम नाउ ऑन यू आर द मॉनिटर ऑफ द क्लास. It is the responsibility of you to maintain discipline in the class. You have to see without touching the students or scolding the students. That is the work of a good leader. Without using a lot of words, with your action, you need to keep the class silent. And तुरंत आकाश जी मेरे क्लास पूरे साइलेंट हो गए. जैसे ही वो लड़का खड़ा होता है सारे बच्चे चुप. मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. वो लड़का आज तक till date, June month, July month, he is only handling the class. Whether it is the recess time, I just have to tell him that what is this? Why there is so much of disturb? You know, boys, they want to share. एक दूसरे के डब्बे में से खा के एकदम ऐसा लेके. तो मेरा तो टारगेट है इनडिसिप्लिन नहीं चलेगा स्कूल में. वो मेरे my management will question me. So as a result, I just told him that, see, I don't want all these things which is happening. Please tell them to sit in their place and have. तो बस हो गया काम. मुझे सिर्फ उसको बोलना है कि बेटा what is this happening? I trusted you so much and see what is happening. Then वो बोलेंगे जाके everyone sit down. सब लोग बैठ जाओ. मिस को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है. सब अपने अपनी जगह पे बैठ जाओ. तो बस. So that is how my classroom till date is disciplined. None of the teachers have complained, but yes, little masti idhar udhar hoti rehti hai. So that I feel is very good. It should happen. That shows that they are lively. But rather than that, nothing at all. And my class became, right now, it is developing, and they are these boys who are the hooligans, which every teacher's termed them as घर पे बिठाओ. सबको लेटर दे दो और घर पे सस्पेंड करो for 7 days. वो कुत्ते बिल्ली की आवाज निकालते when the teachers enter the class. And what I told the students, I just call them, बेटा इधर आओ, कुत्ते बिल्ली की आवाज निकाल सकते हो, very nice. I know a platform who gives a facility to take out all the noises of animals. So I will give you that connection with that network, and you can take out. But right now, आपके जो काम है, अभी क्लास में आए टीचर्स आ रहे हैं, आप कुत्ते बिल्ली की आवाज निकालोगे तो टीचर बच्चा समझ सकते हो ना. तो बच्चा टीचर पढ़ाएगा कैसे? वो कुत्ते बिल्ली की आवाज सुनने में उनको मजा आता है. हम लोग भी बैठ जाएंगे सुनने के लिए. तो बेटा आपका पढ़ाई कैसे होगा? तो कोशिश करो कि कुत्ते बिल्ली की आवाज आप बाहर जाके निकालो जहां पर बहुत सारे आपको कुत्ते बिल्ली मिलेंगे. सो दैट ऑल्सो रिड्यूस्ड इन माई क्लास. सो आकाश जी, मैं ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट शेयर कर सकती हूँ, but these are some of the wow moments when सारे teachers अभी मुझे बोलने लगे कि yes, it is changing
yes, उनको सस्पेंड करने की जरूरत नहीं है, but yes, there is a lot more things I need to get it to be resolved before everything, before the results, SSC results, March 2023. Yes, exactly. Yes, thank you so much, sir. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यस यस, थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग दिस। तो इससे हम क्या सीखने को मिलता है? जैसे अगर मैं कहूँगा तो हम, क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने ये थोड़ा देखा भी है, जैसे हम पढ़ाई भी करते तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा शरारती बच्चे होते, तो हम टीचर्स होते हैं उनको ध्यान नहीं देते, या उनको कोई जरूरत नहीं, भाई उनका काम करो, पढ़ने बाद में जाओ। पर ऐसा नहीं है, हर एक इंसान ही है, भले उसकी समझ उतनी नहीं है, पर उसकी समझ क्यों नहीं है, फिर हम अगर रिस्पॉन्सिबल है तो फिर हमारा ही काम है कि उसकी समझ को थोड़ा ऊपर लेके जाए, उसकी समझ को बढ़ाए, और फिर वो ऑटोमेटिकली अच्छा बिहेव करने लगेगा, जैसे मैम ने उनको समझाया। तो ऐसे ही अगर हम सब मिलके करेंगे, ऑफ कोर्स मैं तो ये इम्प्लीमेंट चीजें करूंगा ही, पर जो भी व्यूअर्स इन फ्यूचर ये वीडियो देखेंगे, ये एग्जांपल्स देखेंगे, तो वो भी अगर अपने जीवन में, अपने लाइफ में ये इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ऑफ कोर्स हम अपने साथ जो बुरे दोस्त भी होते हैं ना, हम उनको भी मतलब बुरा नहीं मानेंगे, हम उनमें भी कुछ अच्छा ही ढूंढने की कोशिश करेंगे, और अपने शत्रु भी हमारे मित्र बन सकते हैं। तो हम अपने ऐसे प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे यूज कर सकते हैं, पर्सनल लाइफ में यूज कर सकते हैं। इसी के साथ जैसे थोड़ा शेयर करना चाहूंगा कि जैसे आपने बोला कि ये टीचर के लिए जो वाव मूवमेंट होते हैं ना, तो उसके बारे में मैं शेयर करना चाहूंगा। मैं जब डिप्लोमा में था, हम 10वीं तक जैसे गांव में पढ़े, इतना कुछ नहीं, गांव में रहते तो एकदम लोग समझते थे वो सिंसियर है, वैसे पता नहीं मैं हूँ नहीं, पर तो बहुत अच्छा अपना स्वभाव, वैसे तो लोग समझते हाँ बहुत अच्छा है। पर जैसे जैसे हम डिप्लोमा में गए, पर हुआ क्या था, जैसे हमारे कुछ ऐसे अपने लाइफ में मेंटर्स मिल जाते हैं, टीचर्स ऐसे मिल जाते हैं जो अपने को काफी मोटिवेट करते हैं, हम उनके एकदम फैन हो जाते हैं और कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो जैसे मैं डिप्लोमा में था, तो उस वक्त मुझे एकदम प्रोजेक्ट बनाना, एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज पे बहुत ज्यादा पता नहीं था, वो मेरी अच्छाई थी बुराई थी, पर मैं तो मानता हूँ अच्छाई थी, क्योंकि मैं अगर वो सीखा तो मैं एट द एंड, जब मैं डिप्लोमा थर्ड ईयर पास आउट हुआ, हम डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी प्रोजेक्ट बेचते थे। फाइनल ईयर के जो प्रोजेक्ट्स होते थे वो लोग बनाते थे, वो बनाते नहीं थे, हम उनको बना के बेचते थे। तो ये सब अगर वो टाइम पे एक्शन लिया हो उसका रिजल्ट था। पर वो टाइम पे हमें कुछ ऐसे टीचर्स भी मिलते थे, वो बोलते थे कि आप क्वेश्चंस पूछो, और कुछ ऐसे मिलते थे जो सिर्फ अपना काम करने के लिए आए थे। तो ऐसे होता है, जब हम काफी सारे क्वेश्चंस पूछते थे, तो वो जो टीचर्स थे एंग्री होके वो निकल जाते थे, या तो कुछ ऐसे हम लोगों ने, मतलब बहुत सारे टीचर्स स्टूडेंट भी थे, उन लोगों ने टीचर्स को बहुत परेशान किया था, ऐसा हम बोल सकते हैं। उनको लगता था कि भाई क्या बच्चे सिर्फ वैसे ही चलते रहते हैं, तो वैसा नहीं था। पर वो जो जो उनसे सीखे, और जब आज कुछ दिनों बाद, जब मैं मेरा एक पर्सनल शेयर करता हूँ कि जब हम अभी जब टीचर से बात होती है, या कोई और रेफरेंस से जब वो उनको पता चलता है कि भाई हाँ ऐसे ऐसे बंदा है, वो ये कर रहा है, तो जब सेकंड वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ या फर्स्ट हुआ था, तब जो टीचर्स के एक्सपीरियंस, मतलब उनका जो व्यू था, हाँ भले वो अच्छा ही मानते थे मुझे, पर जब ये ऐसी कुछ चीजें हम अलग करते हैं, तो उनको मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में ऐसे कुछ लोग आए ना, मुझे जितना आनंद नहीं हुआ, मुझसे ज्यादा आनंद मेरे टीचर्स को, मेंटर्स को या कलीग्स को होता है। तो ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसे लोग होंगे तो अपने आप में एक एनर्जी आती है, और हम अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। और जो टीचर्स आप लोग जैसे खुश होते हैं दूसरे के खुशी में, तो ऑफ कोर्स सामने वाले पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे आपने उस बच्चे के लिए किया, तो वो बच्चे के लिए भले ही उसको क्या लगा होगा, पर अगर वो खुद को और आगे कुछ महीने वो उस पर मनन करेगा ना, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, वो बहुत अच्छा बेहतर बन सकता है। और अगर हम किसी की खुशी में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको अच्छा बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो ऑफकोर्स उस सामने वाले के जीवन में बहुत ज्यादा चेंजेस आ सकते हैं, वो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो सकता है। और
बस ABCD का भी यही पर्पज है, ऑब्जेक्टिव है कि हम सब मिलके साथ में आगे बढ़ेंगे, लोगों के जीवन में कुछ कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश करेंगे, सब मिलके सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करेंगे। और जब हम सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करेंगे, ऑफ कोर्स उससे ज्यादा क्या आनंद हो सकता है जब हम ये अपने तीनों गेस्ट से जो वाव मोमेंट, जो एक्सपीरियंसेस उनसे हमने सीखे हैं, तो ऑफ कोर्स इसी एक्सपीरियंस को और फील करने के लिए हम 6 अगस्त को मिलेंगे। 6 अगस्त को हमारा ऑफलाइन इवेंट है मुंबई में, वहाँ पे सभी लोग मिलेंगे, सभी ब्रांड एम्बेसडर्स आएंगे, अलग अलग एक्सपर्ट्स आएंगे, डिफरेंट फील्ड से गेस्ट आएंगे, उनसे हम सीखेंगे, उनसे सीखने की कोशिश करेंगे और इवेंट को बहुत अच्छे से सक्सेसफुली रन करेंगे। और कोशिश करेंगे कि हम तब तक सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करें जैसे ABCD ने। बस 2 मिनट में मैं शेयर करना चाहूंगा कि भाबड़ इंटरनेशनल पब्लिकेशन ने जब ईयर स्टार्ट हुआ था, आयुषी मैम भी यहाँ पे है, तो हमने टारगेट लिया कि 100 ऑथर्स की सक्सेस स्टोरी बनानी है, मतलब 100 लोगों को ऑथर्स बनाना है, तो कैसे भी कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स आज जो जर्नी हुई है अब तक जुलाई में, तो ऑलमोस्ट 100 तक हम पहुंच गए हैं। इंडिविजुअल ऑथर्स भी काफी सारे हैं और एंथोलॉजी के ऑथर्स भी हैं, 100 प्लस हो गए हैं। और 6 तारीख को फिर हम अनाउंस भी करेंगे कि कितने लोगों का सक्सेस स्टोरीज हुआ है। तब आप जान भी पाएंगे कि कैसे लोगों की सक्सेस स्टोरीज, उनका कंट्रीब्यूशन कैसा रहा, हम लोगों ने कैसे कंट्रीब्यूट किया है। और फिर से एक बार मैं सबके सामने ये भी बोलूंगा, ये इंटरव्यू है, पर इंटरव्यू भी मेंशन करना चाहूंगा कि जो ABCD के जो भी मेंटर्स है, जो भी कोर टीम है, उनके कंट्रीब्यूशन से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ। और एक और नाम जो किसी ने भूलना नहीं, आगे बढ़ते हैं उसी प्रोग्राम की ओर। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे, तब तक के लिए सॉरी, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे विद अनदर गेस्ट, उनसे भी सीखेंगे। आज हम काफी चीजें सीखे हैं, कोशिश यही होगी कि हम अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। सो वंस अगेन थैंक यू डॉक्टर सोनिया मैम फॉर वंडरफुल शेयरिंग, रेखा मैम फॉर योर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन, और रचना मैम आपके जो एग्जांपल्स थे। ऑफ कोर्स थैंक यू ऑल फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल जर्नी। थैंक यू सो मच सर। फ्राइडे, तब तक के लिए टेक केयर, ग्रेट डे, बाय बाय।